Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Aamir Mairaj and you are watching Concept Coaching. Viewers, हम ग्रेड 10 का मैथमेटिक्स कर रहे हैं और मैं आपको एक एक क्वेश्चन जो है ना वो सोल्व करवा रहा हूँ। तो ये लेक्चर नंबर 61 है, एक्सरसाइज 2.3, और आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 सॉल्व करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, दिस इज पार्ट 2। सो मैं इसको पार्ट 2 लिख देता हूं और सॉरी, ये थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, तो आज हमने पार्ट नंबर 2 करना है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड के इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square minus 2kx plus 2k plus 1 equal to 0 is 6। तो हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ग्रेड 10 का मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं और ये लेक्चर नंबर 61 है। तो इस इक्वेशन में जो a की वैल्यू है दैट इज 1, a की वैल्यू आप देख सकते हैं दैट इज 1, a की वैल्यू 1 है, x स्क्वायर के साथ लिखा होगा तो वो a होगा, और b की वैल्यू ये वाली है माइनस 2k, और c की वैल्यू है 2k प्लस 1। तो हम लेट करते हैं, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। लेट अल्फा एंड बीटा are the roots of the given equation। Then sum of the roots is equals to alpha plus beta, and this equal to minus b over a, minus b की वैल्यू minus 2k over a की वैल्यू 1, so this is plus 2k, this is alpha plus beta, and then product of the roots this is alpha beta, this equal to c over a, this equal to 2k plus 1 over 1, this is 2k plus 1, so this is alpha beta. Now as per condition of the question, as per condition of the question, that the square of the sum of the roots, that is alpha square plus beta square, this equal to 6. Now we will add the plus 2 alpha beta and minus 2 alpha beta, so that we may convert it into alpha plus beta and alpha beta, so that we can put the value of alpha plus beta and alpha beta. So adding and subtracting adding and subtracting two alpha beta to make it a perfect square, we get this is alpha square
plus beta square, and we will add plus 2 alpha beta and minus 2 alpha beta. So this equal to 6. So ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया. ये जो है ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा. So this is alpha plus beta whole square, and this is minus 2 alpha beta equal to 6. Now putting values, we put the values. Alpha plus beta की वैल्यू 2k और अल्फा बीटा की वैल्यू 2k plus 1. So put the value. इसकी वैल्यू है 2k, इसका स्क्वायर माइनस 2k plus 1, this equal to 6. So this is 4k square minus 2k minus 1 equal to 6. क्योंकि ये माइनस था ब्रैकेट के बाद, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे. 6 को इधर ले आइए. दिस इज 4k स्क्वायर minus 2k, and this is minus 1 minus 6 equal to 0. So this is 4k square minus 2k minus 7 equal to 0. तो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं. 7 4 से 28 आता है. सो अगर हम इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करें तो व्हाट वी विल गेट? 7 4 से 28. तो व्यूअर्स हमने यहां मिस्टेक कर दी है, हमने यहां पे 2 नहीं लगाया, तो यहां हम 2 लगाएंगे. सो वी गेट 4k स्क्वायर minus 4k and minus 2, this equal to 6. This is 4k square minus 4k minus 2 minus 6 equal to 0. This is 4k square minus 4k minus 8, this equal to 0. So we should take the common. 4 common, we get k square minus k minus 4 equal to 0. And this implies that k square minus k minus 4, sorry, not 4, this is 2, sorry, this is 2 equal to 0. 4 जो है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा. So you may write at 4 it does not equal to 0. So this thing equal to 0. So इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं. मल्टीप्लाई करने से -2, ऐड करने से -1. सो दिस इज k स्क्वायर minus 2k plus k minus 2 equal to 0. So k should be common. We get k minus 2 plus 1 common, k minus 2, this equal to 0. So k minus 2 is common and k plus 1 is 0. So this implies that k minus 2 equal to 0, and this implies k equal to 2. k 2 आता है तो इसको हम कर देते हैं. Likewise second k plus 1 equal to 0 होगा. So k plus 1, this implies that k plus 1 equal to 0, and this implies that k equal to minus 1. तो इससे भी हम ब्रैकेट में कर देते हैं. ये हमारे पास दो वैल्यूज आ जाती हैं. सो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. k की वैल्यू 2 और 1 आ गई, -1. सो व्यूअर्स, if you are understanding, if you are learning from my classes, then please, I would like to request, please subscribe my channel and don't forget to ring the bell.
अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।